So as I was saying that the objective of this one is to set investment and export as priority areas in our research agenda. I think Uzma will present us a situation analysis, and what we are seeking here is a discussion on different ideas. So we are hoping having a great debate on this issue, and Dr. Nayab is also here. So ma'am, a few words from you. Okay, okay, Dr. Uzma, it's over to you. Bismillahirrahmanirrahim. My today's presentation is on Pakistan's exports and growth, export-led growth. The purpose of this presentation is to is mainly to tell us about to explore the exports of Pakistan and how export-led growth is performing, to see the performance. I should start with the Pakistan's trade history. Pakistan introduced some macroeconomic reforms like trade liberalization and export promotion, and economic growth was robust in 1980s. After that, the slogan of export-led growth was adopted. That was in 1990s, and the rate of export growth of exports fell from 13.5% in 1970s to 5.6% in 1990s, and average annual growth remained less than 5%. The slogan of export-led growth, coupled with liberalization of trade and imports, were immensely outstripped in that time period. It was seen, and there was alarming trade deficit that was in 2000s. Export promotion strategy was adopted in early 90s, and also import substitution strategy was also adopted. And even at present, we are having some policies like import substitution. Pakistan's economy is mainly in trouble due to the IMF program and challenges which are faced after the pandemic and recent drought and recent current flooding these days in Pakistan. And Pakistan's economic growth turned negative, minus 0.5% in 2019 to 20. While industrial production also contracted, and the growth of 7.2% in 2022, as compared to 7.8% in last year. Services sector also contracted, and total investment also declined, and exports have shown mainly no prominent role in economic growth and in development of Pakistan. So this is the trade deficit chart, which shows exports and imports, and the gap is so huge. Pakistan's trade economy is Pakistan's economy is inward-oriented economy, and it is growing slowly. In their inconsistent export-oriented and macroeconomic policies, there is more reliance on investment and exports, and exporting primary and intermediate goods is mainly there, and exports are dominated in cotton and textile and apparel, while no prominent value addition in exports is observed. And the rising imports and stagnant exports, this is also observed in case of Pakistan, while the export of services showed an increase, which is almost 18.82% during the first 7 months of current fiscal year. So services sector is also important. This is the chart which shows the exports of growth in services as percentage of GDP, and we can clearly see a decline and a very moderate increase. This is the recent monthly exports of Pakistan from October 2021 to July 2022. Pakistan's exporting sector are mainly textile goods are mainly which are performing better. Then there are other manufactured goods which include carpets, rugs, mats, sports goods, surgical goods, medical instruments, pharmaceutical, food group, and sugar. And there is less product diversification and even less market diversification that is seen mainly, and export is contracted in few products like almost 75% of the total exports consisting of 5 sectors only, and 40% of exports are of textile, 23% are of apparel products, and other exports include rice, leather, etc.
Mainly the sectors which require support, they are engineering goods, pharmaceutical, auto parts. These sectors have potential and they require some policy support and some sort of support. Then footwear, chemical, meat and fruits and vegetables, etc. Similarly, there should be focus on services sector also because this sector is performing well. So the services sector, there are transport, logistic and tourism which can be targeted. Now, it has been seen that there is less market diversification. Major markets for Pakistani exports are USA, China, Afghanistan, UK, Germany, Bangladesh, Italy, Spain, etc. And efforts are required to seek new markets for Pakistani products because exports have potential to boost up the economy by seeking some new destinations. And there is a policy that is adopted by Ministry of Commerce, that is Look Africa Policy Initiative. So that is basically for market expansion. Pakistan's export performance can be seen in this figure. If we compare Pakistan with other Southern Asian exports, we can see that they rose by 165% from 2005 to 2017. Similarly, Thailand's exports rose by 136%, Vietnam's exports rose by 519%, but Pakistan's exports rose by only by 50%. So this is very much differences there. Pakistan shares the world exports has remained weak over the past 3 decades, and Korea and Vietnam has twice the per capita GDP than that of Pakistan. Once Pakistan's model was the example for Korean economy, but now Korea has also gone far away. Bangladesh is also performing well as compared to Pakistan, and we can see this in this graph. This is the graph of Pakistan, India, and Bangladesh, and the red line shows the performance of exports as percentage of GDP of Bangladesh, and we can see that Pakistan is in green line, it is shown, and Bangladesh is performing well. Then export-led growth and versus import substitution is there. Export-led growth strategy, which Pakistan tried to seek economic development by opening itself to international trade. Export promotion was there, but it yielded almost no benefit. Then Pakistan adopted many liberalization policies. There was a focus on market diversification and product diversification. That should be a focus mainly. And import substitution, Pakistan strived to become self-sufficient by developing its own domestic industries, and Pakistan protect domestic economy, and there are high tariff rates in Pakistan. Other countries have even lesser tariff rates, but Pakistan is having high tariff rates, which is also not good for the economy. Missing export-led growth factors. It has been seen that in Pakistan, export-led growth is not there. So what are the factors we have to discuss? There is downward export trend or stagnant exports and less diversification. And then having frequent fund programs. Due to this, the economy is also not performing very well. And exports of goods is in focus and not the services. Then decline in suboptimal levels of saving and investment. This is also the problem of Pakistan economy. And then persisting policy inconsistencies are there. There is coordination failure and the other fiscal issues that are also not good for Pakistan's economy. Then there is no support that is taken from research and development. Policies should be based on some research and development, which is not there. Lack of technology adoption, patenting and property rights, that is not present, and even no focus on branding. That is also a big problem for Pakistan's economy. Then low investments and huge trade deficit, that is devastating. And reliance on export financing and subsidies is also not very much encouraging. Similarly, a rapidly expanding workforce is there in Pakistan. It's about 1.7 million people every year. So the workforce is also there, but maybe they are skilled and sometimes they are not skilled.
So we need to see that what hinders export-led growth in Pakistan. The uncertainties due to policy reforms adopted by Pakistan are there, and uncertainty in business and lack of competing capacity is there. Then macroeconomic uncertainty is there. Policy interactions are missing, and business environment is not favorable at all. And other countries even don't want to invest in Pakistan. And there are high trade costs, which is also again a hindrance. Then there were no thoughts on competitiveness and export-led growth channels of development and policy design, especially. And the more focus of the policies was on management and stabilization, on crisis management and stabilization. But the focus should be on export-led growth that is direly needed. Then fluctuation in export growth occurs due to the energy shortages and other input shortages, then contraction in world market and low prices of goods. Exchange rate fluctuations are there, and there are also some associated risks with exchange rates. Impact of drought and recent flooding that is devastating for the food export especially. And inefficient resource allocation. Domestic markets are not properly developed. Supply chains are not very much efficient in Pakistan. Then there are some policies and steps taken by Pakistan to enhance exports, especially strategic trade policy framework. This is the policy which is focusing on enhancing exports. Then Look Africa policy initiative that is focusing on market diversification and enhancing exports. Then national tariff policy that is also about the protection of domestic economy and about tariffs. Then trade related investment policy is also there to attract investment, and special economic zones are there, and industrial hubs are there which also attract FDI. So we can see, moreover, there are some trade agreements like bilateral trade agreements, free trade agreements, and some other type of agreements like SAFTA and CPEC. But we can see that these policies are only covering export enhancement, market diversification, and investment. But there are other things also needed. For example, there should be political stability in the country. Business environment should be good, and these should be based on research and development that is missing in these policies. So these are also the reason because why our policies are not working well. Then there are some available resources in Pakistan because sometimes we say that there's potential in Pakistan's economy, so we should see which are the available resources. There are export promotion zones, then clusters are connected with government, and Board of Investment is also continuously working for better business environment, and Ministry of Commerce and Trade and Ministry of Industry is also there. So also there's presence of multinationals, and security and policies should be adopted well. So the framework is there, we can see, but there is some, we are losing some connection in policies, so that can be addressed. Then there are some final thoughts, which are exports have not emerged prominently in growth and development of Pakistan, and active participation in international trade is very much needed for Pakistan. Focus on exports, and the country must maintain a sustained economic growth. And export diversification, we have seen that we should expand, we should focus on market diversification and also product diversification, and the markets should not be limited. We should explore more markets, world markets. Then there are policy inconsistencies which should be removed, and interaction of right policies at the right time is very important to provide a business environment and also export promotion. The exchange rate policies creating depreciating currencies that generate favorable conditions for exports. This is mainly the hypothesis, but the associated risk factors are always there, which we are facing, and there is ability to with those risk factors that they counter the export gains both in terms of profitability and also in terms of volume. And Pakistan should focus on services export policies in spite of the other goods policy.
Then I should end with this quote that once a person starts thinking about the growth of an economy, it is next to impossible for him to think about anything else. And with this, I would also like to identify some key areas and research topics where we can further work. Services export and policy coherence and efficient policies should be there. Then supply chain management and supply chain development, that is also an important topic. Targeting global value chains, that is totally lacking in Pakistan's exports. And branding, patenting, and intellectual property rights, that is very important, and we should know the importance of this topic. And then maritime trade, because trade is mainly happening through the hot waters. So maritime trade structure, logistics, and export facilitation possibilities, that is very important. And then trade agreements are also very important. So by this, I will end my presentation. Thank you so much. Composition of exports क्या जरा वो तो दिखा दे. Composition of exports, this one is indicating the sectors which need support. Although textile is also there, sports sector is also there, which I have not included in it. Sorry, composition क्या है? कितने परसेंट किस चीज से एक्सपोर्ट हो रही, कौन सी एक्सपोर्ट, कौन सी चीजें हो रही, कितने पे हो रही? That I have not. Exports. Textile sector is total exports जो हैं उनमें से क्या-क्या एक्सपोर्ट? Okay, there is almost 75% of total exports, and that there are main 5 sectors in Pakistan economy. They are mainly textiles, and then sports sectors there, textile and apparel sector, rice and leather and fruits, and also I have also written here that that also include carpets and rugs and mats. Then surgical goods and medical instruments and pharmaceutical services, almost they are contributing 61%. That is not, I have not given the details of services sector. Thank you, Uzma, for a very good overview of the exports. Actually, मेरा जो ना एक क्वेश्चन ये है ना कि मतलब ये कि आपने ईस्ट एशियन टाइगर का मतलब ये कि बस पे उन पे किया, और if you see actually the main reason between the divergence between us and the rest of Asia, in particular China, Asia, East Asian tigers, or even now you can consider Bangladesh in India. Actually, it is जहाँ पर मैंने मतलब ये कि जितना पढ़ा हुआ है तो मतलब ये कि we could not shift our industrial structure which we initiated with state-led industrializations to the private sector. तो आपका राय इसके बारे में क्या है कि मतलब ये कि why did we fail with regard to that aspect? Actually, our industrial base is very weak, and Pakistan economy is a developing economy. We have a lot of problems, and there are even after a few years, we sometimes we face any type of earthquake and floods and any type of this type of calamities, and also there is budget, our budget deficit problems and fiscal issues are also there. Macroeconomic policies are not stable. So those countries provided the proper business environment. That's why their policies worked well, and they managed to liberalize their economies in time. Uzma, thank you so much for the presentation. मेरे को 2-3 concern है. जी जी. First of all, you showed us that slide again where you calculated the support required to those sectors. Okay. So my concern is that you are claiming that these sectors has the potential. Yes. पहले तो मुझे जरा थोड़ा सा इस पे मतलब क्लैरिटी चाहिए कि हम ये पोटेंशियल कैलकुलेट कैसे कर रहे हैं बेस्ड ऑन ऑनगोइंग ट्रेंड्स. और ये जो आप सपोर्ट कह रही हैं मतलब इससे क्या है कि पॉलिसी सपोर्ट जस्ट लाइक टेक्सटाइल की चाहिए, जैसे हमने टेक्सटाइल को दी है, ऑटो सेक्टर को दी है, यहाँ कुछ सपोर्ट से आप और मुराद ले रहे हैं. दूसरा जस्ट मेरे 3 कमेंट्स हैं. दूसरा जो है वो हमने बात की है मार्केट डाइवर्सिफिकेशन और प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन की. इफ वी लुक एट मार्केट डाइवर्सिफिकेशन, डू यू थिंक कि जो हम चीजें प्रोड्यूस कर रहे हैं वो इंटरनेशनली कंपेटिटिव हैं? फॉर एग्जांपल, आई बिलीव जो आपको डेटा मिल रहा है एचएस का at even at 12 code, that is misleading. That does not capture the quality. Let's take the example of अभी हमने PIDE में एक study जो मैं देख रहा था वो की थी कि there is export potential with China on agriculture products. Just take the example of garlic. The garlic we are having from China is
much better than we are producing at our domestic market. तो आप what do you think कि जो market diversification है वो possible है ये जो चीजें हम produce कर रहे हैं. The second thing is we are talking about product diversification. Again, product diversification मेरा नहीं ख्याल कि जो हमारी फर्म्स हैं जो प्रोड्यूसर्स हैं, अगर हम टेक्सटाइल की ही सिर्फ एग्जांपल ले लें कि वो वैल्यू एडिशन की तरफ जाना चाह रहे हैं. So what I am really concerned about to know the reasons why our textile sector is exporting weaved or fabrics instead of exporting garments. मतलब क्या रीजंस हैं, क्या बॉटलनेक्स हैं वहाँ पे. तो कोई हमने उनको प्रोटेक्ट भी किया हुआ है, सारा कुछ किया हुआ है, फिर भी है. और लास्ट ये था, यू मेंशन दैट बांग्लादेश एंड वियतनाम are the best example. So I am really concerned about what lessons we can learn from their experience, क्योंकि उनके पास भी यही bottlenecks थी, उनके पास भी regulatory structures भी यही था, energy crisis, input prices भी high थे, but they are performing very well. Okay. First of all, I will say that Pakistan is basically exporting in intermediate and low tech goods, and there is no advanced level goods are not there. So Pakistan should come out of this trap. In case of Vietnam and Bangladesh, I have also mentioned in this my presentation that there should be a right policy at the right time. For example, if we are providing some policy on investment, we are providing export diversification policy, and but we are not providing political stability at that time. We are not providing our good tax structure at that time, and we are heavily imposing tariffs on imports, and we are protecting domestic economy at the same time, and also we are liberalizing the economy at the same time. So the problem comes here. We are sort of a confused economy that we even don't know what we need to do. The policies should be like this, that there should be a short-term policy, a medium-term and long-term. For example, as Japan did, they first protected their auto sector economy, and then after some time they liberalized their economy. So Pakistan should adopt this type of models, and similarly we can learn from the Vietnam and Bangladesh. One point is that there is a policy lack, and the other is that they captured the capital. For example, in Pakistan, when there was energy shortage was there, we failed to provide our industry those energy inputs, and the big stars, star firms of textile, they just shifted the firms from Pakistan to Bangladesh. So that was a support that we provided Bangladesh the support, I think, like this. I have a question. We have protected our economy like for a long time through high tariffs and import substitution policies. Do you think that this is the problem of that is causing product stagnation? Because the product diversification requires high-tech inputs from other countries. We cannot diversify products with our own obsolete technology. Do you think imports can play a role in export diversification, something like that? Okay, we have to, yes, they are providing a hindrance. We have to see what the other economies are doing. If we compare the tariff rates with other economies, we can see that they are going on zero tariff, but we are high tariff economy. So this is a problem. And when we import something, and in Pakistan, mostly we assemble things and then we export. So we are also depending on imports. And if we are paying high tariffs on imports, then how can we earn more in exports? So this is a problem. I have also said that Pakistan economy seems confused. Our policymakers are not thinking on these lines. They are not thinking how Pakistan can compete. We keep talking about finding markets, but our political instability. No, it's not just a matter of political instability. I think it is a matter when there is FDI concerns are there. Then it is a matter. Our Pakistan security, especially when there is Afghanistan problem is there, security also matters. The other countries don't want to invest here. No.
You also talked about international fairs. Dubai had a huge international fair. Everyone who went to the Pakistani pavilion, they said that we came out very confused. What kind of a country we want ourselves to be presented as? Yes, I think you are I mean, right. a traditional, exotic country, if that's the case, there are many more countries which are much more exotic than us. We are not high tech. Yes. So what are we? That is the traditional products we are taking to the fairs only. There is no advanced thing in those fairs. But we are representing our culture over there. And we can attract some tourism. We can. That is exactly the point. I mean, so what kind of markets are we looking for there? But we should do. We should do it. I think we should move beyond the really chata. Yes, of course. We have to move towards technology. We have to move towards patenting and branding. That's what I'm also saying. We have. So it's not just a matter of finding new markets and diversifying our exports. But in terms of markets, I think first you need to produce those products. Yes, in this way you are also right. But in terms of markets, even China has a very huge market, and we don't know. We go to only specific places. You also asked the question about Chinese market. We have to explore where, in which province we can send them our goods. That is also a problem for us. The market is another way. We are talking about. You mentioned that pharmaceutical sector has the potential, and we should provide in some pulse. My concern is that how much capacity do we have, production capacity? For example, अभी एक छोटा सा हमारे यहाँ पे कहने issue है और हमें वो पैनाडॉल नहीं मिल रही, ठीक है? This is the capacity we have. और हम बात कर रहे हैं कि हम markets जो है वो diversify करें. So what I am saying is that first we need to invest in our own production. Yes, we need to solve our problems. I want to add something, please. I guess, Uzma, thank you so much. Nice presentation. I guess it's a baseline initial study. So I'm not going to ask you a question or definitely, or I just want to help you out. Like question नहीं पूछा. As you just talked about the agreements or market diversification की बात भी आपने इसके अंदर कर ली, opportunity की बात भी कर ली. We have GSP plus like December 23 तक मौजूद है और अभी तक हमने क्या किया सिवाय UK और जर्मनी की कोई काम नहीं किया हुआ. ठीक है. The problem is आपकी productivity and the quality. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. अच्छा, फिर आगे जाके आप देख लोगे तो इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स में आप यू स्टैंड 93. 2020 में आपकी एक्सपोर्ट्स आप 65 150-200 कंट्रीज के अंदर आप कहाँ पर पहुंचे हो. तो इन चीजों को भी जरा मेरे ख्याल में देखने की जरूरत है. और दूसरी कि एक्सपोर्ट्स लेड एक हरगिज नहीं. अगर आप हमारा देखें एक मैगजीन, मुझे याद नहीं पर उसका नंबर कौन सा है, अगर आप इसमें चेक करें तो हमने इसमें ट्राई टू जस्ट शो दैट पाकिस्तान इज बेसिकली कंजम्पशन लेड ग्रोथ इकोनॉमी. आपने अभी एक ग्राफ यहाँ पे शो करके दिखाया था, उसके अंदर आई डोंट फील लाइक 15 परसेंटेज पॉइंट से हम ज्यादा जा रहे थे. एक्सपोर्ट टू जीडीपी रेशो वहीं पे ही है. आप बांग्लादेश और हाँ ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट वहीं पे आपके पास मौजूद है. आई मेंशन्ड इट वंस कि यार डिमांड ही नहीं है. हमारी गुड्स की डिमांड ही नहीं है. हम वहीं कहीं पे जो ना घूम रहे होते हैं. ठीक है. अच्छा, और एक इंडेक्स है जिसके बारे में मैं थोड़ा सा, इट्स अ मिसलीडिंग इंडेक्स जिसको हम वो कह रहे होते हैं ट्रेड ओपननेस इंडेक्स. अगर उसका फॉर्मूला देखें तो जब जीडीपी ग्रो करेगा तो वो नीचे आ रहा होता है एंड पीपल फील कि अच्छा यार ट्रेड ओपननेस तो है ही नहीं, यहाँ पे इनकी खत्म हो रही है. और जहां पर ट्रेड ओपननेस जो है ना वो नीचे जा रही है, वहीं पे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि एक्सपोर्ट्स जो है तुम्हारी ज्यादा आ रही थी. तो ये इसके ऊपर भी थोड़ा सा आप देख लें. बहरहाल इट्स अ बेसलाइन स्टडी, इनिशियल स्टडी, इट्स अ गुड स्टडी और हम आपको मशवरे दे रहे हैं. वी शुड आस्क यू क्वेश्चन कि आप इसमें मुश्किल चीजें हमें बता दें. लेकिन अगर आप इन चीजों के ऊपर भी देखें तो बहुत जबरदस्त किस्म की स्टडी बन सकती है. और विदाउट इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स को डिस्कस करना मतलब ये कि हाफ एक बात है. तो उसको देखना बहुत जरूरी है. आपने अभी खुद से मेंशन भी किया कि एक्सपोर्ट्स के लिए वी नीड इंपोर्ट्स. पर्टिकुलरली अगर हम एनर्जी वगैरह की अगर हम बात करें तो उसके बगैर तो काम हो ही नहीं सकता. और बैलेंस ऑफ ट्रेड की अगर आप बात करेंगे तो जब भी हमारी जो है ना जीडीपी ज्यादा हो रहा है उसी में आप ऑब्जर्व करेंगे कि बीओटी और ज्यादा नेगेटिव हो जाती है क्योंकि इंपोर्ट्स आर हाई. वो इंपोर्ट्स तो वहीं से आ रहे हैं. हाँ एग्जैक्टली. थैंक यू सो मच उज़मा, बहुत अच्छी इनिशियल थी आपकी स्टडी. ओके, मेरा भी एक सजेशन है, क्वेश्चन नहीं है. जी जी. I think we need to have a serious appraisal of each sector and each product, and then look for possible avenues. Yes. The markets to which we could export. So I think we need to first figure out sector-wise our comparative advantage
Product-wise. I think every sector itself has a problem that needs to be solved first. For example, like Dr. Ahmed Waqar told about Panadol. So we need to explore why it is not in the market. We need that medicine. That is very important. So similarly, in other sectors, whatever is missing, we need to explore first that what are the reasons for those problems. So you are right in this sense. Assalamu alaikum. बहुत शुक्रिया Dr. Uzma for, as Dr. Saud said, for the initial presentation and setting up how we can move forward. A quick question. What in your opinion is the way forward for the free trade agreements? Or the second is a question from the macro perspective कि जिस तरह last year हमारी जो consumption to GDP ratio है वो तकरीबन 95% plus थी. So do we really have the exportable surplus with us? मतलब exploring new markets is good, लेकिन क्या हम वो produce भी कर पाएंगे यहाँ पे? ये दो questions थे, free trade agreements and the exportable surplus capacity in the economy. Thank you. About free trade agreements, I can say that these are good agreements and we should go for such agreements because in these agreements, there are many advantages we can have. For example, we exempt tariffs if we import something from those countries, and if we export something to them, there is also some convenience we can get. So free trade agreements are good. Even bilateral agreements are very good. And also someone, I think Dr. Saud mentioned about GSP Plus. That is also a good agreement because in GSP Plus, we are not fully utilizing it. In fact, in GSP Plus, what happens that if a country reaches to a level that is mentioned in it, then it means that country has become competitive and it comes out of GSP. But I don't know why Pakistan wants to stay in GSP, and we are again going for GSP. We are not making ourselves competitive. So it's good to come out of GSP Plus. So this was about the agreements, and sorry, what? Yes, your other question was about the export surplus. I think we don't have much export surplus because we don't have the storage houses. We have some other problems which are in-house problems, and these natural calamities and this type of things. So time to time, our economy is in need, and whatever we want to export, we even need it in Pakistan. Our policies are not supporting. If you remember, we exported wheat from Pakistan, even it was needed in the country. So export surplus is not properly managed. And I think we don't have it. Thank you so much for a wonderful initial presentation. बहुत सारी thoughts इसमें से निकल रही हैं. अभी जो discussion हो रही थी, I was just wondering कि अगर हम क्या industrial base का आपकी exports के साथ क्या linkage होता है? Is there a linkage to it? क्या कभी हमने इसकी तरफ सोचने की कोशिश की है कि what is the industrial base and then exports? Imports को तो I think कि जब हम इतनी ज़्यादा imports कर ही petroleum products रहे हैं तो I don't know, but exports का क्या हम industrial base के साथ नहीं कोई relationship देखेंगे whenever we are setting a trade policy or whenever we are talking about exports? Yes, industrial base का link definitely है. जो हमारी इंडस्ट्री जिन चीज़ों पे डिपेंड करती है, फॉर एग्जांपल अगर आपने पेट्रोलियम की बात की, तो हमें एक्सपोर्ट करने के लिए भी उस इंडस्ट्रियल बेस को किसी तरह से competitive और कुछ बेहतर बनाने की ज़रूरत है. Then we will be able to produce some good things, and also the export surplus can be after that. So इस चीज़ को कंसिडर तो करते हैं पॉलिसीज में, बट पॉलिसीज में और बहुत सारी चीज़ें होती हैं. For example, I think so that when they are making a policy for export diversification, also they should have the investment experts over there. They should also concern those who are dealing with businesses in Pakistan. They should also concern those who are domestically producing something. Domestic market हमारी strong होगी तो हम उसके बाद exportables की तरफ जाएंगे ना. तो पॉलिसीज में भी हमारी वीकनेसेस हैं. जब पॉलिसी बनती है तो स्टेक होल्डर्स इवन डोंट नो अबाउट द पॉलिसी, व्हाट दे आर बीइंग. फॉर एग्जांपल हमने स्टील इंडस्ट्री वालों को विजिट किया,
تو انہوں نے بتایا کہ جو پالیسی بن رہی ہے اس میں ہمیں انوائٹ نہیں کیا جاتا. انہوں نے ایک اپنی پالیسی بنا لی اور وہ ان کو ویسے سینڈ کر دی جس کو انہوں نے کوئی پالیسی میکرز نے اس کو نہیں لیا. تو دیٹ از اے بگ پرابلم. آپ پہلے ان سے پوچھیں تو صحیح کہ آپ کو پرابلم کیا ہے اور اس کے بعد آپ پالیسی بناتے ہیں. تو ہماری پالیسی فارمیشن میں سیریس پرابلم ہے. اچھا, میرا یہاں پہ ایک چھوٹی سی سجیشن یہ ہے, بلکہ ہم اس پہ کام کر بھی سکتے ہیں, کہ ہمیں اوور آل ڈیفیسٹ دیکھنے کے بجائے اگر ہم سپوز ہر کنٹری کے ساتھ ایئرلی ڈیفیسٹ دیکھیں, سرپلس یا ڈیفیسٹ جہاں پہ بھی آ رہا ہے, تو وہاں ایک بہتر پکچر بھی ہمیں کلیئر ہو سکتی ہے اور گیپ بھی آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ کہاں ہمارا پوٹینشیل ہے. تو آئی تھنک اس طریقے سے ہم بہتر ایک طریقہ ہے کہ ہم پوٹینشیل کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. جی بالکل, اس طرح سے پوٹینشیل کیلکولیٹ ہو سکتا ہے. اور آئی تھنک جہاں ہم فری ٹریڈ ایگریمنٹس میں جاتے ہیں وہاں پہ ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں. بٹ دا کیس از دیٹ پاکستان از ہیونگ ویری فیو فری ٹریڈ ایگریمنٹس لائک ود سری لنکا. ایک ایگریمنٹ ہے اور سری لنکن اکانومی اس ٹائم پہ اس کا پرابلم ہے. دین ملیشیا کے ساتھ ہے, اس میں صرف ہم پام آئل کا اس میں ہم ڈیل کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ چائنا کے ساتھ ہے اور ایک آدھ اور کوئی کنٹری ہوگی. ایگریمنٹ سے زیادہ اگر ہم سپوز کسی کے ساتھ نہیں بھی ایگریمنٹ, تو ہماری جن کنٹری سے ہماری ایکسپورٹ یا جی ٹاپ ایکسپورٹس کو دیکھ کے بھی کر سکتے ہیں. گیپ کیلکولیٹ کریں تو ڈیفیسٹ کا, تو وہاں سے ہم بہتر طریقے سے جو ہے نا ان کو شاید. Yes, you are right. Actually, they مطلب یہ کہ especially the private sector, they are very much hesitant in taking new initiatives. کیونکہ مطلب یہ اگر آپ دیکھ لیں تو اٹ از جس طرح آپ نے مطلب یہ کہ بتایا کہ انجینئرنگ گڈز ہے یا فارماسیوٹیکلز ہے, تو ضرور ہے کہ ہم نے ایکسپورٹ کرنا ہے. ہم کوئی ایسی چیز ڈھونڈے جو جس میں مطلب یہ کہ ہم مارکیٹ ایکسس مطلب حاصل کر سکتے ہیں. ضروری تو نہیں ہے کہ مطلب یہ کہ جو انڈیا کر رہا وہ ہم کریں. مطلب یہ کہ آئیڈینٹیفیکیشن آف دا گڈس, ٹھیک ہے, اور پھر مطلب یہ کہ اسپیشلائزیشن, اور تیسرا مطلب یہ کہ نمبر پہ جو آ جاتا ہے نا وہی نیو انیشیٹو اور یا مطلب یہ کہ گلوبل مارکیٹ ایکسس. Here I can say that initial support, it is usually this is understood that initial support has to come from public sector. So but in Pakistan we can see that public sector is not supporting in that manner which is needed. اینڈ بزنس کو بھی, بزنس سیکٹر کو بھی یہی لگتا ہے کہ گورنمنٹ ہمیں یہ سپورٹ نہیں کر رہی, گورنمنٹ ہمیں یہ سپورٹ نہیں کر رہی, ہمیں فلاں چیز نہیں مل رہی اس طرح. تو دس از دا ریزن بزنس وی شوڈ کم ٹو سم ادر ماڈل. آئی تھنک وی شوڈ فارگیٹ اباؤٹ گورنمنٹ اینڈ وی شوڈ تھنک آؤٹ آف باکس. آئی تھنک یوزلی ہوتا تو یہ ہے کہ پبلک سیکٹر آپ کو ایک بیس سپورٹ تو دیتا ہے. ایک اور فیکٹر جو ہے نا کہ ہمارے یہاں جو انڈسٹری ہے خاص طور پہ, وہ اگر دیکھیں تو وہی جو اگر ہم گنے تو وہی ہیں کوئی 10-15 یا 8-10 جو بھی لوگ ہیں. اگر ہم چھوٹی انڈسٹری کو جب ہم اگر ان کو مطلب ان کے انسینٹیو کو دیکھیں تو کیا ہے, میری لاسٹ ویک فیصل آباد سے نا میرے دوست تھے کچھ نا, ان کی اپنی انڈسٹری تھی یہ فیصل آباد میں, اب انہوں نے بند کر دی. اب انہوں نے ہاؤسنگ کالونیز بنا دیں. اگر آپ یہ M3 پہ جائیں نا, جب فیصل آباد کو جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو رائٹ سائڈ پہ پورا کوئی 15 سے 20 کلومیٹر پوری آپ کو دونوں سائڈ پہ کالونیاں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. اب میری ان سے بات ہو رہی تھی, میں نے کہا یار کیوں آپ لوگ اس طرح پیسہ لگا رہے ہیں اور آپ انڈسٹری لگا رہے ہیں, تو ملک کو تو ضرورت ہے اس سیکٹر کے گرو کرنے کی. وہ کہتا ہے یار ہمارا دماغ خراب ہے اس کے اوپر ہم جائیں, ہمیں انرجی کے پرابلم ہے. وہ اس طریقے سے پرابلم گرنا شروع کر دی. تو انہوں نے کہا بھائی ہمیں یہاں پہ اب کیونکہ ریٹرن زیادہ مل رہا ہے تو اس لیے ہم نے وہ بند کرنے, وہ لومے وغیرہ اور باقی جو انڈسٹری چھوٹی انڈسٹری تھی وہ ساری انہوں نے اب تقریباً بند ہو گئی ہیں. اور وہ ساری انویسٹمنٹ جو وہ کراؤڈ آؤٹ ہو گئی ہے اور وہ چلی گئی ہے اس کے اندر جا کے نا ہاؤسنگ سیکٹر کے اندر چلی گئی ہے. تو میرے خیال کے مطابق ہماری ایکسپورٹ کو یہ جو ہاؤسنگ سیکٹر ہے یہ قرض بن گیا ہے ہمارے لیے. ایک نیشنل لیول کے ہمارے جو ایک دو جو بڑے جو ایک تھریٹ ہیں قسم کے ہمارے لیے, جو کہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے بھی ہیں, فوڈ سیکورٹی کے حوالے سے بھی ہیں, یا باقی اور بھی کہہ لو, اور خاص طور پہ ہماری ایکسپورٹ کے لیے بھی ایک ہم یہ جتنے ابھی تک بات کر رہے ہیں ہم اوپر سے اوپر کی بات کریں, پروڈکٹ یوں ہونا چاہیے. ہماری تو بہت پہلے بیسک پرابلم ہے, ہمارے پوٹینشیل کا پرابلم ہے. ہمیں مطلب اگر ہم انڈیا اور پاکستان کے ایک فارمر کی ایگزامپل لے لیں, ان کی جو گندم کی ہم اگر کاسٹ آف پروڈکشن دیکھ لیں ان میں, اور ہم اب یہ 2015 میں یا کب ہم نے منیر صاحب کے ساتھ مل کے ہم نے ایک چھوٹے سے یہ کیلکولیٹ کی تھی, تو اس وقت کے مطابق جو انڈیا کا جو فارمر تھا اس کا 1 ایکڑ کے اوپر اس کو کوئی
اگر ہم مطلب کرنسی کو مطلب کہ کر لیں اس طرح دونوں میں سیم ہو جائے ایکولنٹ ہو جائے تو ان کو میرے خیال میں 8 سے 10,000 روپیہ خرچہ بن رہا تھا اور جو پاکستانی فارمر تھا اس کا کوئی 20,000 روپیہ آن ایوریج ان کا 20,000 روپیہ جو تھا وہ کاسٹ آف پروڈکشن بن رہی تھی. تو اس سے ہماری جو وہ کمپیریٹیو ایڈوانٹیج ہے وہ ہمارا مطلب کہ لوز ہو جاتا ہے. تو میرے خیال کے مطابق ہمیں یہ بیسک لیول کی جو چیزیں ان کی طرف بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. تھینک یو. اچھا عزما مطلب پالیسی انکنسسٹنسی رہے گی مطلب what is the key message from your presentation, what should be the key policy for export promotion? Interaction of policies is needed. This is the key policy. نہیں کوئی ایک harmonization and interaction of all the policies. نہیں یہ تو ایک سیاسی بات ہوگی نا مطلب آپ you should reduce the tariffs یا you should promote imports. Then I must say that it should be, as I quoted the example of Japan, they went for short-term tariff policy and then they adopted some other policy in medium-term and long-term. So this is the better thing. I think that if you need to protect your economy, you can protect it for some time, but after that, you should meet some target. You should do some policy change in it. That is, I think, more recommendable. اچھا میں بھی کچھ ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں. اکانومسٹ تو نہیں ہوں لیکن میری اپنی کچھ آبزرویشنز ہیں تو کمپنیز کے بارے میں بھی پڑھتا رہتا ہوں تو اس لیے کچھ انفارمیشن ہے. ایک تو میں نے جو ایشو فیل کیا ہے جو کمپنیز ساری کہتی ہیں گورنمنٹ کی انوالومنٹ ہمارے یہاں بہت زیادہ ہے. جو مین پرابلم ہے اگر صرف یہ ایک سنگل اسٹیپ گورنمنٹ اٹھا لینا کہ اپنی انوالومنٹ کم کریں تو بہت سے مسئلے ہمارے حل ہو سکتے ہیں. فار ایگزامپل صرف ایک فارما سیکٹر کا میں ایک آپ کو ڈسکس کرتا ہوں کہ فارما میں اس ٹائم دوائیوں کی پرائس کی اپروول جو ہے نا وہ پی ایم لیول پہ کیبنٹ دے رہی ہے. آپ کیسے امیجن کر سکتے ہیں ایسے حالت میں بزنس کو گرو کرنا کہ میڈیسن کی پرائس کی اپروول بھی جو ہے نا گورنمنٹ دے گی. ابھی بات ہوئی تھی پیراسیٹامول کیوں شارٹ ہوئی ہے. پیراسیٹامول اس لیے مارکیٹ میں شارٹ ہوئی ہے کہ جو کمپنی بناتی ہے گلیکسو اس کی کاسٹ آف پروڈکشن زیادہ ہے اور جو سیل پرائس ہے اس کی کم ہے تو کمپنی کیسے پروڈیوس کرے گی. اچھا اس سے بھی ایک الارمنگ سچویشن آپ نے پچھلے دنوں ایک پڑھا ہوگا کہ ایک کمپنی کے گودام پہ چھاپا مارا گیا اور وہاں سے پیراسیٹامول ہورڈ ہوئی تھی وہ برآمد ہوگی. اب آپ کو شاید معلوم نہیں ہوگا کہ یا معلوم ہوگا وہ کمپنی کا اپنا گودام تھا گلیکسو کا اور اب آپ جسٹ اور وہاں سے جو اب ہیڈ لائن تو یہ بن گئی نا کہ گلیکسو نے جو ہے نا وہ ہولڈ کی ہوئی تھی یا چھپائی ہوئی تھی. حقیقت کیا تھی وہ ٹوٹل 2 دن کا جو ہے نا اسٹاک تھا ٹوٹل 2 دن کا. اب جسٹ امیجن کریں کہ اگر کل کو انٹرنیشنل میڈیا میں ایک خبر پبلش ہوتی ہے کہ گلیکسو نے سیلاب زدہ پاکستان میں پیراسیٹامول جو ہے نا وہ اسٹاک کی ہوئی تھی اس کمپنی کی کیا ویلیو رہ جائے گی. تو اتنے بڑے بڑے مسئلے ہیں ہمارے بیسک سے گورنمنٹ جو گورنمنٹ کی انٹریکشن ہے. جی یہی چیز ویٹ کے کیس میں تو اسٹوریج تھی اور وہ سارا ویسٹ ہوا. تو یہ گلیکسو جو ہے اتنی بڑی کمپنی جب محفوظ نہیں ہے گورنمنٹ کے ایک 17 گریڈ کے آفیسرس ہیں تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس ملک میں کہاں سے انویسٹمنٹ آئے گی. پاکستان سے تو ساری ملٹی نیشنل فارما کمپنیز جو ہیں وہ ایگزٹ کر گئی ہیں. جو 2-4 رہ گئی ہیں جب آپ ایسے ہی کام کریں گے جب پرائسنگ جو ہے وہ گورنمنٹ کا جو ہے نا ایک ادارہ نہیں اول تو ہونی ڈی ریگولائز چاہیے. تو جو میں نے جتنا کمپنیز کو پڑھا ہے تو ان کی پہلی ڈیمانڈ جو ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے ڈی ریگولرائز کریں آپ چیزوں کو. لیکن ہمارے ہاں کم ہونے کی بجائے وہ جو لیول ہے وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے. دوسرا جو جی ایم صاحب نے کہا تھا وہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے نا وہ سارا انسینٹیو جو ہے نا وہ اسٹیٹ ڈیولپرس کو دے دیا گیا تو کون سی کمپنی جو ہے نا یہاں پہ آ کے انویسٹمنٹ کرے گی. ایک تیسرا یہاں پہ یہ ہے کہ یہاں پہ تو ایک کام کرنا ہی مسئلہ ہے. بڑے لیول پہ تو آپ کو میں نے ایک ایگزامپل دے دی. چھوٹے لیول پہ میری سسٹر کی ایک مائکرو بایولوجی لیب ہے. انہوں نے 1-2 پروڈکٹس بنائی جو باہر سے امپورٹ ہوتی ہیں. انہوں نے یہاں پہ رجسٹر کرنا چاہی تو وہ کر نہیں سکے اس کو کیونکہ اس کی ریکوائرمنٹس اتنی سخت تھیں. فار ایگزامپل ان کا بالکل انیشیل سیٹ اپ ہے. اس کی پہلی ریکوائرمنٹ یہ تھی کہ جی آپ کا جو مینوفیکچرنگ فیسلٹی ہونی چاہیے وہ جو ہے نا ایسی جگہ پہ ہونی چاہیے جہاں پہ کمرشل ایریا انڈسٹریل ایریا میں ہونا چاہیے. اب یہی ایک بہت بڑی رکاوٹ تھی.
दूसरा उनको एक प्रॉब्लम ये थी कि अच्छा उसकी फीस थी, फिर अच्छा पहले मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी आप बनाएं, अब एक इनिशियल सेटअप कहाँ से बनाए, 10 20 25 50 लाख की जो इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा है। दूसरा ये था कि इसके साथ जो है ना उसकी लाइसेंसिंग फीस तकरीबन 1 लाख रुपए थी, तो वही उसके लिए पॉसिबल नहीं थी फिलहाल देना। तो इस तरह के इश्यूज हैं, गवर्नमेंट जब तक अपने आप को पीछे नहीं हटाएगी कैसे मसले सॉल्व होंगे। और ये तो जैसे स्लज में भी आ सकता है ये वाला इशू, जैसे हम पाइड की कोई स्टडी करते हैं। ओके और जो मल्टीनेशनल्स वाली आपने बात की है उसमें यू आर राइट, मल्टीनेशनल्स को तो ये लीगल प्रॉब्लम से भी इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया जाता कि वो इस वजह से भी यहाँ से अपनी इन्वेस्टमेंट ख़त्म कर लेते हैं, तो ये भी एक कंसर्न है। तो आपके अच्छे पॉइंट्स हैं। जी मैं कुछ पूछ सकता हूँ? उसमें अभी भी बताइए, आई थिंक जरा हमें ग्रैन्युलर करना पड़ेगा, जरा नीचे जाना पड़ेगा कि हमारी कॉम्पोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट क्या है, हमारी एक्सपोर्ट्स एक एक एरिया में क्यों नहीं बढ़ती है, उनकी इलास्टिसिटी क्या है, और एक्सचेंज रेट इम्पैक्ट क्या होता है, उनके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस क्या हैं। तो आपने जब लिटरेचर सर्वे किया आपको ये चीज़ें कोई मिली कि नहीं मिली? सर चीज़ें तो बहुत थी, मैंने थोड़ा सा फोकस जो हमने डिस्कशन की थी उस पर रखा था, तो ये चीज़ें भी थी। डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम मैं इनको भी इनकॉर्पोरेट कर दूंगी। देखिए वी हैव टू, जो एफर्ट है ना वो अगले 3 महीने का, हमें एक्सपोर्ट्स पे कुछ ना कुछ तो निकालना है जी, और सोच के हम ये नहीं कह सकते कि हुकूमत बस छोटे सरसरी बातें नहीं हम कर सकते। वी हैव टू बी वेरी डीप एंड वेरी ग्रैन्युलर, और हमें ये डीपली देखना है कि क्या मसले हैं, एक्सपोर्ट्स क्यों नहीं बढ़ रही, कौन से एरियाज में पोटेंशियल है, डाइवर्सिफिकेशन अपनी बातें नीचे चल के देखते हैं कि जी हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं किन एरियाज में ज्यादा है, किन एरियाज में कम है, उनके ट्रेंड्स क्या है, उनकी लास्ट। देखो वी हैव टू बिहेव लाइक इकोनॉमिस्ट, वी हैव टू थिंक अबाउट ऑल दीज थिंग्स। इस पे जो भी बंदे काम कर सकते हैं लग जाएं। एक्सपोर्ट्स के एक एक एरिया, मैं तो कहता हूँ जाके ये देखें कि फॉर एग्जाम्पल क्या कहते हैं, अगर कोई आलू भी एक्सपोर्ट हो रहा है तो क्या है उसमें, कितने आलू एक्सपोर्ट हो रहा है, मैंगोज एक्सपोर्ट हो रहे हैं कितने हो रहे हैं। हमें जाके कंपोजिशन देखनी है, कंपोजिशन देखनी है, उस कंपोजिशन में ट्रेंड्स क्या हैं, कौन सी अप डाउन जा रहे हैं, कौन से पिछले 5-10 साल का देखें क्या हो रहा है, और फिर उसके अंदर देखें कि जो एक्सचेंज रेट इफेक्ट है कितना, इलास्टिसिटी कितनी है, व्हाट डू वी एक्सपेक्ट इस एक्सचेंज रेट से कुछ होगा। फिर हमें देखते हैं कि उनके क्या जो कॉस्ट्स हैं। ठीक है, इफ नेसेसरी we can even do a survey of exporters, बल्कि probably we should do focus groups of exporters। अगर हमें ये काम, अगर हमें मैटर करना है तो we must have a very good analysis of exports। जरा गहरे सवाल पूछें और गहरे सवालों का जवाब लें, बेशक जाएं फैसलाबाद, बेशक जाएं कहीं भी, but we have to find this out। क्योंकि अगर ये नहीं कर रहे तो we are doing the country a big disservice। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही है कि एक्सपोर्ट क्यों नहीं, और एक्सपोर्ट्स क्या हमारी बढ़नी चाहिए, कैसी बढ़नी चाहिए। सर्विसेज की बात करते हैं, हमारे पास सर्विसेज क्या एक्सपोर्ट करने को है। फॉर एग्जांपल हमारे जितने खाने वाने के स्टॉल्स हैं ये क्यों नहीं एक्सपोर्ट, अगर मैकडॉनल्ड यहाँ आ सकते ये बाहर क्यों नहीं जा सकते। हमारे जो सारी ये रिटेल चेन्स हैं ये क्यों नहीं बाहर जा सकती। मैकडॉनल्ड अगेन यहाँ और भी आ गया तो अल्फता वगैरह क्यों नहीं जा सकते। ठीक है, सो वी हैव टू थिंक अबाउट हर एरिया में एक्सपोर्ट्स किसी तरीके से डेटा लें, डेटा से पहले बताएं एक्सपोर्ट्स का कंपोजिशन क्या है। ठीक है, फिर देखिए बाकी एरियाज में पोटेंशियल ऑफ एक्सपोर्ट्स क्या है। आई वुड थिंक द बेस्ट, वेरी गुड आइडिया, अगर आप बैठ के अगर आप बना सकें एक क्वेश्चनर, और वैसे पहले तो मेरा ख्याल एक्सपोर्टर्स की तरफ फोकस ग्रुप्स करें, वो अपनी चीखें मारेंगे बट वो मेरा ख्याल है हमें किसी तरीके से पता करना है कि एक्सपोर्ट क्यों नहीं बढ़ी और इनको क्यों नहीं हम बढ़ा सकते और क्या करना है। हमारी पॉलिसी रिकमेंडेशन बड़ी डीप होनी चाहिए, ये नहीं डीरेगुलेट वगैरह, वो तो ऊपर से बात है ना, नीचे से हमें जाना है कि हर एरिया में क्या मसला है। ठीक है, अगर हम बेसिक चीज एक्सपोर्ट करें तो हम क्यों नहीं, हम मार्जिन क्यों नहीं बढ़ा सकते, ये भी हमें सोचना है। अगर हम सिर्फ कपड़ा एक्सपोर्ट करें तो क्यों नहीं कपड़े बना के, अब ये जो है खादी, सना, सफीनाज वगैरह ये तो काफी अच्छे ब्रांड्स है, ये क्यों नहीं एक्सपोर्ट करे, कितने करे, दे मस्ट बी एक्सपोर्टिंग। जी डॉक्टर नायाब वाज सेइंग कि इनकी ब्रांचेस हैं बाहर, दैट वाज अ कमेंट। तो पता करें ना, वी हैव टू फाइंड आउट। हमें एक एक एरिया लेके एवरीबडी इन पाइड अगले 3 महीने कोशिश करें कि एक्सपोर्ट्स पे हमको क्या काम कर सकते हैं, एक्सपोर्ट्स को हम क्या समझ सकते हैं। आई मीन दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और तो आई थिंक दिस इज जस्ट द बिगिनिंग, बट आई थिंक
we have to go much deeper than this. Literature survey करें, क्या मिलता है literature survey में, आप लोग सब जो भी कर सकते हैं literature survey करें, आपने किया है Uzma, thanks, but we need to now go further. एक तो हमारे पास, मेरा तो ख्याल है पहले इस तरह करें, जो composition of exports है ना, इनकी तो एक चार्ट कॉरिडोर्स में लगा देंगे composition of exports का, ताकि हम सब नहीं हंसने की बात, this is our job. You are right. अभी इधर हॉल में आते हुए मैंने देखा बाहर सिटी प्लानर का भी एक चार्ट बना हुआ है, that was very encouraging. Similarly you can देखिए आपकी रिसर्च, live with your research, learn to live with your research. हमारी वॉल्स भरी होनी चाहिए इन चार्ट्स के साथ, ताकि हम कुछ सीखे तो सही ना, वरना भी तो देखे ना कितने अफसोस की बात है कि पाइड में एक्सपोर्ट्स की नॉलेज ही कोई नहीं है. सो वी बेटर बिल्ड इट अप. तो आप 2-3 एंगल सोचे, एक तो ये चार्ट्स बनाए और बाकी लोगों को भी आप बनाए, इलास्टिसिटीज की भी ग्राफ बनाए, वो कोई छोटी सी ट्रेंड्स बनाए. लेट्स ऑल start working on exports and putting them up on walls and let's try and figure out what's happening. क्योंकि अगर हमारे सामने कोई ग्राफ्स कोई वो ग्राफिकल चीज है नहीं तो we learn nothing. ठीक है जी. तो 3 things we have to have clear idea कि क्या है ये competition of exports, क्या जितनी डिटेल में जा सकते हैं जाए. ठीक है. फिर हम देखें elasticities क्या है, do we have elasticities across goods के नहीं. फिर हम देखें इनके ट्रेंड्स क्या हैं. फिर हम देखें कि इनमें पोटेंशियल्स क्या है. फिर हम देखें कितनी कमोडिटी है, कितनी वैल्यू एडेड है. उसी के अंदर देखें कि अगर मैंगोज बेच रहे हैं तो व्हाई नॉट मैंगो पल्प, व्हाई नॉट मैंगो प्रोडक्ट्स. अगर हम बेच रहे हैं ये चीज़ तो व्हाई कांट वी डू समथिंग एल्स. ये अगर हम स्लोली बिल्डअप करें नॉलेज और साथ साथ सोचे इफ वी कैन डू अ सर्वे, हाउ, what are the questions, what are the questionnaire, सारे जो भी इसमें इंटरेस्टेड हैं सब बैठे क्वेश्चनर मुझे बना के दे इस ये बाय नेक्स्ट वीक कि हमने क्वेश्चनर क्या पूछना है. अगले 2-3 दिन बैठे बनाएं कि क्वेश्चनर क्या करना है. वील प्रॉब्ली डू अ सर्वे ऑन दिस थिंग. ठीक है. हम ना सिर्फ इनसे पूछेंगे बल्कि वो जाके फिर ये भी देखें एलाइड इंडस्ट्रीज कौन सी जो एक्सपोर्ट कर सकती है, जो समीना सफीनाज है और ये जो वकील लोग हैं, बुंदू खान है, ये वो इनसे जाके पूछिए क्यों नहीं एक्सपोर्ट करते. व्हाई डोंट दे व्हाई डजंट बुंदू खान गो टू 20 डिफरेंट कंट्रीज. ये फ्रेंचाइजिंग बड़ी अच्छी फ्रेंचाइजिंग हो रही है लोकली. फ्रेंचाइज पे कौन पेपर कर रहा था? एनीबॉडी? कोई पेपर कर रहा है फ्रेंचाइज? मैंने कहा था जी, देयर इज समवन. कौन? where is this person? Why is he or she hiding? कोई नहीं आप कह रहा मैं फ्रेंचाइज पेपर कर रहा हूँ. Yes, he is there. कौन? साकिब. सर मैं कर तो कर रहे हो ना, तो बस उनसे अब ये मुझे बताओ कि जो फ्रेंचाइजिंग पाकिस्तान में वाई कांट फ्रेंचाइज ओवरसीज. सर ये एक बहुत बड़ा इशू है कि ये मेरा जो ख्याल है कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है हमारा उसको मुझे ख्याल नहीं चाहिए. मुझे डिटेल्ड रिसर्च चाहिए. मुझे चाहिए कि आप बताएं फ्रेंचाइजिंग का मॉडल यहाँ क्या है. फिर हमने इन लोगों से जाके पूछना बाहर क्यों नहीं कर सकती है फ्रेंचाइज. बुंदू खान बाहर क्यों नहीं, अगर मैकडोनल्ड यहाँ फ्रेंचाइज बेच सकता है वो बाहर क्यों नहीं बेच सकता. ठीक है. अगर ये सले अल्फता कारफोर यहाँ सकता तो अल्फता क्यों नहीं जा सकता. हमें ये सवाल पूछते हैं एंड आप लोगों का काम ये जाके पूछें यार, कोई थोड़ा सा दिलेरी पकड़े ना. ये बैठ के सरकारी बातें करना कि डीरेगुलेट कर दो, डाइवर्सिफाई कर दो, दैट्स नॉट गुड इनफ. वी हैव टू गेट डीपर. ठीक है जी. तो ये मेरे ख्यालात है. एनीबॉडी एल्स जी? अच्छा, इफ नो मोर क्वेश्चन, we have had a discussion here और now we are ending I think. आपके और पॉइंट्स हैं तो आप ऐड कर दें. अब मुझे बताएं ये तो ना, प्लीज नोट दिस डाउन. लेट्स डू इट. इन्वेस्टमेंट में भी लिटरेचर में देखें क्या है और आप ग्राफ बनाएं, इन्वेस्टमेंट चीजें बनाएं यार. कोई मतलब लेट्स गेट डीपर इनटू इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट किन एरियाज में हुई है पिछले 5-10 साल में, ट्रेंड्स क्या हैं इन्वेस्टमेंट के अंदर. पहले डेटा को जरा ग्रैन्युलर तरीके से अंदर जाके डेटा को देखें. ये नहीं कि हमें सरसरी बात करनी है. ठीक है. फिर देखें इन्वेस्टमेंट पे जो काम हुआ है उस पर क्या नजर आ रहा है. आइकॉर्स क्या है, फॉर एग्जांपल आइकॉर्स की हिस्टोरिकल ट्रेंड्स क्या हैं. अगर आप देखें इंटरेस्ट रेट इलास्टिसिटी क्या है, अगर आप देखें कि क्रेडिट कंस्ट्रेंट्स क्या हैं, जो भी एक्सेलरेटर मॉडल देख लें, जो भी हुए हुआ काम. बाद में अपना काम शुरू करें. पहले हम सर्वे तो पूरा कर लेना. सर्वे में देखें निकलता क्या. सर्वे में से हाइपोथेसिस तो बना लेना क्या क्या निकला क्या क्या नहीं निकला. तो सर्वे करने का भी जरा हम देख लेना. हमें आना चाहिए सर्वे क्या होता है. लिटरेचर सर्वे जब आप करते हैं क्या करते हैं.
you figure out what the literature is saying, उसके में themes क्या निकलती हैं, each theme में से क्या निकलता है, you are trying to extract the juice from the literature. तो हमें juice निकाल के दें और हमें निकाल के दें कि जितनी डिटेल में आप जा सकते हैं वो करके दें. ठीक है जी? Okay folks, thanks. Okay, If thank any- you so much. Thank you.